A very good morning to all my science students, BSc students. A very good morning to you all. Today we have organized this webinar exclusively for our BSc students to understand what are the career opportunities that are available for students who are doing BSc with specialization in zoology. In order to enlighten you on the career opportunities that are available for BSc Zoology students, today we have with us as a resource person, Professor Vinayak Dalvi. A warm welcome to you, sir. Professor Vinayak Dalvi. Sir is here or? Thank you very much and good afternoon to all of you. Yeah, good afternoon, sir. I have joined at 12:15 only. Yeah, okay. Took a Thank little you. time to go to the mic because the screen had. No problem, sir. Sir, Yeah. thank you so much and a very warm welcome extended to you from Ghanshyam Das Jalan College. Thank you. I, Dr. Rajeshwari Ravi, the director and IC principal of Ghanshyam Das Jalan College, extends a very warm welcome to you on behalf of our management, our faculty, our students, all of us. Thank you for taking time out for guiding our students on the career opportunities that are available for students who are doing BSc with zoology as a specialization. Students, let me introduce to you our resource person who is with us today, who is going to really enlighten you and you can learn a lot. He's going to give you the right path that you should be choosing after you finish your graduation. So we have with us Professor Vinayak Dalvi, who has 37 years of academic experience and he was the ex-HOD of zoology, Mithibai College, and has served the University of Mumbai as chairperson for Board of Studies in Zoology for several years. He was the coordinator for publishing more than 125 university textbooks and has also authored more than 50 textbooks for BSc Zoology students. He has introduced innovative flexi syllabus and open unit for zoology students of degree college. He established Sindhu Swadhyay Sanstha, that is University School of Integrated Aquatic Education at Kalina, Kalyan, Ratnagiri and Sindhudurg in the form of PG Department of Zoology that was lacking for more than 150 years. He was a joint secretary to the governor in the education department for 5 years. He has also served for 5 years with ERM Pan Asia Pacific for Commonwealth youth programs appointed by the Huddersfield University, London for international quality assurance in education of partner universities of the 6 countries. Professor Dalvi is presently working on the governing body of St. Xavier's College and IQA advisor, that is Internal Quality Assurance Advisor of KV Pendarkar College. Once again, a very warm welcome to you, sir. Now I pass on without wasting much time over to you to guide our students. Thank you. Thank you very much, Dr. Rajeshwari Ravi, Thank you, sir. the dynamic director and in charge principal of Ghanshyam Das Jalan College. I use this word dynamic. She might be wondering that we have not met. How come I am flattering her by using this word? I know the background, as I heard, you're from HR College, and HR College products are always dynamic. Thank you. Great legacy, and I had interactions with Madam Manju Nichani on various occasions. She was also on the governing body for 2 years of St. Xavier's. Right. Yeah, so I use this word. My dear friends, I'm going to be very, very informal. In fact, when Aparna called me, she's my student, of course, and she requested me to join for this webinar.
Without any hesitation, I immediately said yes because I don't say no to any of my students ever. But I was, bit reluctant because I was telling her that I'm an outdated person. This world is progressing so fast that the moment you retire, and I have a very bad habit of switch on, switch off mechanism since my student age. So I have washed out everything from my brains. So I was a bit reluctant. I said, get somebody who is currently working. But then she insisted, and I can't say no to our students. So I'm here. I said, let us be informal, maybe because that would help me to revive my memories and be more effective with you. Maybe that's the way I like. And there were instructions given on the screen. I appreciate those instructions, certainly, very methodically organized. But in that, it has been mentioned that you pose your questions in the chat. If I may take little liberty with the permission of Madam Rajeshwari, who's chairing the session, I won't mind if the students directly interact with me and just ask me a question since we are on the Zoom platform. So if you So we will definitely do this, but at the end of the session, we can ask the students who have a question to all right. you All to. right. I never wanted to go in a structured way, but the chairman's ruling, yes. No, we will raise No, that. no issues. No issues. No issues. Absolutely comfortable. And we also have Madam Sabha Sheikh here, who is also faculty. I say hello to you. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon to you. So hello to all of you and to my dear student friends. Well, something that I'm supposed to talk about is career and why career in zoology. Let me very honestly tell you, in my entire career of 38 years, I have never ever advised any student to take zoology. Very dangerous proposition at the outset. You must be wondering why we invited this chap. The reason is different. I'll tell you why. Why I took zoology. Let's start from that. Well, in those days, if there were about 300 students taking chemistry, I'm talking about 1980 when I passed out my BSc, then there were 30 students taking zoology, maybe 15 or 20 taking botany, 300 students taking chemistry. Why I did not take chemistry? Very honestly, it's not that I was very much inclined towards zoology. No, let me confess. I used to like zoology, certainly, but equally or little more, you will not believe, but I used to like physics. Unfortunately, there is no combination which allows you to take physics and zoology in the second year and maybe physics in the third year. This is the rigidity of our education system. Even today, we talk about credit system. Where is the flexibility? Where people are allowed to take credits from some other program, some other courses, as you enjoy in the Western countries, in America, in UK and all that. That doesn't exist here. And then I wasn't knowing. So in the first year, I took physics, chemistry, and I belonged to the first batch of 10 plus 2 plus 3, the guinea pig batch. And so we had biology at that time. In the second year, when I was trying to opt for physics, I was told that you have to have mathematics in the first year in order to take physics. It's not that I wasn't liking mathematics. Many a time, by the grace of 100 out of 100, though I'm highly dyslexic in mathematics, I was equally good. But then I was constrained. I was constrained to take chemistry and zoology in the second year because I never knew what I'm supposed to do in the first year for taking physics in future. Obviously, now in TY, I had an option of taking either chemistry or zoology. As I told you earlier, it is funny, but I used to like physics and zoology, but not chemistry much. Well, everybody told me now that in TY, you better take chemistry because zoology has hardly any scope. They used to say in those days that botany and zoology generally girls take. I said, fine, wonderful.
Of course, that's not the reason. It's on a lighter vein. But then, what did I think at that time? I thought that if I take chemistry, the subject which I really do not admire, then probably I will not be able to perform well. And remember one thing, if you see the job market, the ratio proportion is constant. There is no subject, no degree which assures you a job, and there is no degree which keeps you out of the job. It depends on your performance. And if that is the case, and if I do not perform well in chemistry, suppose my calculation was out of 300, maybe 30 people may be getting the job. In zoology, out of 30, 3 may be getting the job, but I was sure that I will not be amongst those 30 in chemistry, whereas surely I'll be amongst the first 3 in zoology. Have you understood the logic behind selecting the career? There is no subject which has no scope, and there is no subject which has ample scope. If new subjects come up, they also have their life cycle. Microbiology came up. People were getting jobs in microbiology in good old days when I was studying. Thereafter, there was total stagnation for the simple reason that the new subject, new people occupying the jobs, youngsters occupying the jobs, no vacancies will be created till they retire. So microbiology, scope as it was there in 80s has vanished. We know the status of even biotechnology today. So my formula is very simple. For career, take something that you like, that you enjoy, you're sure that you're going to perform well. So if you perform well, job is yours. That is my simple formula, and that is the reason why I have never told anybody take zoology or take chemistry or take physics or take microbiology. No. To tell you the truth. In fact, if I may take a little liberty and say, our subject zoology was almost on ventilator. I, as Madam mentioned, I was with the Governor of Maharashtra from 2003 to 2008. When I came back to Mithibai, believe me, in 2008 in Mithibai College, there was a single student for BSc Zoology. Will you believe it? Mithibai BSc, one single student. And I'm afraid I do not know his admission was done. Any moment zoology was going to shut down. Well, my friends forced me. I took the charge as chairmanship. I took the charge as the chairman of Board of Studies. And that was in 2011. And in 3 years, we had to call the police at the time of admissions to control the mob. 150 students wanted to take zoology in TYBSc. And I'm sure Aparna will share with you. It's not the case with Mithibai today. It has happened all over all the colleges of University of Mumbai, right up to Banda. That is the border of Maharashtra, sharing with Goa, that you have 1 or 2 full batches of zoology. Why has it happened? It is nothing but making the opportunities available to the students. Something called flexi syllabus was mentioned. And yes, I would like to tell you what it means, because I have seen that many of the teachers and the students don't know what is flexi syllabus, what is open unit, and how to use it effectively. Well, friends, syllabus in the university changed after 5 years. And as I told you just now, even I am outdated. All right. So the progress is so fast that in order to cope up with the progress, syllabus cannot be changed every year. You just simply can't do that. Even if you get autonomy, you can't do that. You can't do that. Because then the examination paper pattern has to be changed every year. And then there are repeaters who would find it difficult. So you'll have to set so many sets of papers. What was the solution to that? We all were all the while talking that we should have need-based syllabus, need-based syllabus. What is a need? If you see the situation of University of Mumbai, which spreads from Kulaba in Mumbai to Kulaba in Alibag and beyond that up to Savantwadi, do you think that the need of all these areas is same? Impossible. Forget about this particular span of 720 kilometers. You just think about
say a place called Chiplund and a place called Ratnagiri. Both are in Ratnagiri district. Both these towns are very close to each other. The needs are totally different. Because Ratnagiri has a landing center, it has a seashore, Chiplund doesn't. So how can you form a syllabus which is need-based? Well, this flexibility which I experienced myself as a student came to my rescue. And I thought of having a flexi syllabus wherein instead of 4 units, there are 8 units. I'm telling you this because even you are having that syllabus. Have a look at it in applied component. You have 8 units. Everybody got scared what this man is doing. Double the syllabus. I said you pick up 4 topics from those 8 as per the choice of the students and the teachers, depending upon the resources available in the college, endorsed by the head and the principal, of course. Okay, depending upon the need of that area. And if you carefully study that syllabus, you'll find that if you have proper permutation and combination, there are various capsules within that particular syllabus. I did this experiment with applied component because applied component was never taken seriously. Probably it was used as a tool for adjustment of workload, as is the case with foundation course. I'm sorry, it was never student oriented. Whereas if you effectively use applied component, my friends, even today, that is something which can definitely fetch bread and butter for you. Whether it is entomology, environmental science, fisheries, or marine. All these have flexi syllabus, and out of 8 you have to pick up that forms one capsule, a different capsule. Well, is that enough? Even after doing this, there can be a specific need, or maybe within 5 years something new may crop up which may not be included in the syllabus. So I have kept one unit blank, called as open unit. You teach whatever you like under that. Obviously, it is not compulsory that you have to pick up open unit, because open unit is one of the 8 units. Say this is the open unit. Out of 7, you can always select any 4 of your choice. It's not a must that open unit should be selected. And unfortunately, my experience is hardly any teacher use that open unit. Under open unit, you can go in depth of any one of the topics which makes sense to you, which is essential for you. Or you can think of something absolutely different which is never covered in the syllabus and teach them to the student. I did this experiment. Aparna, this is for you too. You must do these experiments. In the last year of maybe 2 years of my career, that is 18, 19, 19, 20, I retired just in the month of May, of course. I made use of that open unit, and what was the topic taught? Blue water economy and maritime security. Honestly, neither I know blue water economy nor maritime security much. On the contrary, I would say that there is nobody in India who knows both these things together. Blue water economy we have not yet touched. What is blue water economy? Probably this is also not known to many of the fishery researchers and people. Blue water is international water beyond exclusive economic zone. India has not yet exploited exclusive economic zone. Taiwan's and Japanese, they are coming into our deep waters and fishing. The technology, nor do we have the will to go into the deep waters and do fishing. So forget about the international waters. But international potential for economy. There is an MOU, recently I signed it. And the Chief Minister of Western Australia came to sign that MOU personally. Why? Because it is with University of Western Australia, which is the flagship of oceanography in Australia. And they are interested in the triangle between Perth, Mumbai and Mauritius. A lot of wealth in that triangle in the Indian Oceans. We have not even thought about it. So the first half of it was blue water economy. The second half was maritime, strategically using the choke points, no doubt about it. We are very strategically using. We have an advantage of having Andamans, because if there is one island
then 200 kilometers, nautical miles, sorry, 200 nautical miles around that island is our exclusive economy zone. And therefore, these islands are very strategic. Why China is coming up with artificial islands? Because the moment you have one island, a small one, your this expansion is 200 nautical miles around that island. So these islands also can act as choke points. For us, very strategically, we have tie-ups even at the External Affairs Ministry and Defense with Australia. Australia on one hand, Andamans on the other. The passage that is left for the Chinese goods to move can be choked because there are islands in between, and Australia has allowed us to have military activity on the islands beyond our Andamans. There is one passage that comes from, below this Malaysia, but even that has to pass through our islands of Andamans. You must have heard about Somalia. There was a lot of, pirates used to come and loot the merchant navy. Our Indian Navy went to Somalia for protecting the merchant navy movements of the, global ships. Why did we do that? Going to Somalia and showing our presence is another choke point for this traffic that comes from Suez Canal. Now, this is entirely a new thing. What I did, you must have studied derivation and integration in calculus. And probably that must have scared you, for which you have come to zoology. Unfortunately, we do not talk common sense. We make people just mug it and solve derivation, matrices, and integration without understanding why we are doing it. I'm 100% sure about it. People don't tell why we are. Till 10th, we understand what we are doing in mathematics. In 11th and 12th, suddenly we fail to understand any logic and no teacher tells that logic. But the basic logic behind derivation and integration is you have simultaneous equations. Suppose if you have one unknown you want to find out, you have x. You want to find out two unknowns, you have x and y, and two equations, simultaneous equations. So as many unknowns, as many constraints, so many equations, and then it becomes very difficult. For example, you want to calculate that you have to, leave some satellite or maybe something that should land on the moon on such and such a day at this time. How many constants are there? Gravitational force, 9.8. Resistance in the atmosphere that changes after the atmosphere. Then the payload, the load of the entire vehicle. So they keep on shelling out the things. Movement of the earth, movement of the moon around Earth, so many. So how you do? You divide it into different compartments, derivatives, different constraints, and then integrate it. Okay. So similarly, when I was talking about all this, you have to really take into account various constraints and then plan. In this syllabus, I use the methodology of derivation and integration. I divided that particular topic into small topics, distributed it to 35 students, and in fact, I along with them was studying it all throughout the year. And then at the end of the year, we had an integrated product. Of course, I was lucky enough to have one Dr. Atri, who is the India chair on the international organization called IORA, that is the RIM countries around the Indian Ocean. So he's an economist, so he was here. Then I have a what you call MOU with Indian Navy. In fact, there is a institute called as Naval War College in Goa. That is the place where higher grade training is done. The students there are of the rank of Major General, Lieutenant General equivalent in Army, Navy, and Air Force. In short, you cannot become General of the Army or Air Chief Marshal or Admiral of Navy unless you go through that. So I have fortunately MOU with that Naval War College. In fact,
I also teach there. I prepared some syllabus for some strategic use of marine sciences in the war tactics. But then I had that opportunity. So their officers came and taught about the maritime security. Believe me, even though there was an option, out of 35, about 25 students opted this question in the annual exams. Aparna, my first request to you, make use of, and to the students also, you must put pressure over the teachers, find out new topics, ask them to take it under this open unit. I'm sure if you do this, zoology becomes more interesting. More and more students come. I know that there is always, you have to cater to a range of the students. I don't say that you always go for higher level research and all that. You have to look after the masses and also the classes. If you see our textbooks or the syllabus, you will find, because people generally what they do, they go to the slow learners. Nobody thinks about high IQ students. There has to be both the things satisfied. Now, if you take open unit, high IQ students will be happy to do that. The middle lobby may try to move towards high IQ students. See, what was the ratio out of 35, 25 attempted? I have never forced those 10 to attempt, isn't it? So for them, the traditional things are available. और मेरा expenditure बढ़ जाता है. ये price Like rise होता है, मेरा expenditure कम होता है. I'm sorry. Okay, so like we have what do you call? Like we have learner space for the high IQ, we also have something for the masses. How this combination, zoology is very, very interesting. I am sharing this with the students because it is apart from the regular syllabus. You have the liberty to learn what you want to learn, and yes, you can frame your own syllabus. Why zoology became suddenly popular? For several reasons. Most important reason is I had a direct dialogue that time as the chairman with the students, not only from Mumbai, but also from various districts. I used to face the students, talk to them. And I picked up students from there. And believe me, I took them officially on the syllabus committee. Do you know why? Because I strongly have, I believe, and I have full faith in the younger generation. As I said in the beginning, I'm outdated. Why I said so? Because when I was a student, I knew better what I must learn to fetch a job. Once we get our job and we start enjoying our 5th pay, 6th pay, and 7th pay, we forget about it. And probably students know better what is being sold in the market today. Therefore, the students were taken officially on the syllabus committee. And that is the reason why I'm talking to you, that students should influence the syllabus and students should influence what they want to learn. And then more and more students come and they are satisfied. The satisfaction index is high. Of course, we did one more thing. We had a full session with Indian Merchant Chamber to understand what industry wants. And then we used to put our syllabus on the website for public criticism before it would go to all the teachers to decide and to the Board of Studies. I think this kind of things even Jalan College can think of having. And I know your college is not autonomous, but you can always take suggestions from the students and pass it on to Board of Studies so that they would know what students want to learn. Happy students, would you not enjoy learning what you want to learn? Okay, so please do that. Well, as I was telling you, every syllabus has a scope. You have to find it out. And to find it out, all that you require is nothing but common sense. Yes, common sense, which is grossly lacking, unfortunately. I call it as 10 plus 2 plus 3 syndrome. Ever since this new system came in, people have lost their common sense. My friends, keep your common sense alive. You can find n number of opportunities in zoology. Look, I'm not asking you to take zoology, but at the same time, I might be advocating by showing you what you can do. Simple things. How many of you have pets at home? Oh, you're not going to react. Okay, all right. Some of you may be having some pets at home, right?
Let's talk about, say, dogs. Any one good breed of dogs. Anything. Maybe German Shepherd, Rottweiler, Saint Bernard, Shih Tzu, Dachshund, Chihuahua, anything. Beagle, from smaller to the larger breeds, Great Dane, whatever. Let's think of a medium-sized dog, say German Shepherd. I love to call it Alsatian. So generally a litter is of 10 pups, generally. Let us assume 8, too less. Do you know one funniest thing today? Are you aware, zoology students? The prices of all the pets, whether cats, dogs, or even ornamental fish or birds, has become double in this COVID. When the entire market has collapsed, go and find out in the market. It is double. A Labrador, which used to get, I'm not talking about show quality, but general lab, you might be getting at 7,000, 8,000 rupees. Today is nothing less than 14, 15,000. And a good lab at 25,000. Show quality still higher. Why? Because suddenly in this lockdown, children and even elders, they wanted some companion. And the doctors also advised to have pets. And the demand has gone up so much that the prices are double. Entire economy has collapsed except something that is based on zoology. All right, let's just calculate. Forget about the COVID situation. The market may, generally the prices once go up, they don't come down. They stagnate there. But even if you assume so, and even if we consider instead of 25, even if you consider say 15,000 for a pup, okay? Generally breeding is done twice a year. Every 6 months, the beach comes on heat. Okay, so twice a year. As per the Indian Kennel Club, you are not supposed to breed it 4 times in 2 years, but 3 times in 2 years. One heat you have to skip if you want a certificate. Breeders, they breed and sell those pups also without certificate. That's a different story. So generally you get about 24, 25 pups in 2 years. Okay. Let us assume chalo 20. So even then you have 10 pups multiplied by 25. 2.5 lakhs a year. And that is absolute minimum. Huh? Actually, you get about 4 lakhs to 5 lakhs per year. Because I've given all kinds of things to cut down. Okay. Minimum 2.5 lakhs, one female dog will fetch for you. How much is the expenditure? Maximum 2,000 per month for the dog. In fact, if you go for your own formulated feed, I'm giving you the hint directly. Rather than going for pedigree or Royal Canin, which is very costly, okay. If you go for your own formulated feed, give normal rice with chicken curry pieces, you get it at a cheaper price. That's the best for the dogs. Okay, just boil and give. And additionally, you give what is called as fish meal. What is fish meal? It is used in poultry, but do not use poultry quality fish meal because there is sand mixed with it, which will damage the digestive tract of the dog. For poultry, it is perfect. They in fact require sand granules for their gizzard to be effective in the birds. But you get better quality fish meal or fish protein concentrate, wherein it is automated plant that sardine fish is put and the fish meal is ready. It is very high in proteins, very cheap source of proteins, and most importantly, it has a very high range of amino acids, essential amino acids. You just mix it, one egg, say 250 grams or even less than that chicken and rice, your cost will not go beyond 800 to 1,000 rupees a month. Calculate the amount of profit that you are making by having one pet at home as a pet, not even as a business. All that you should be knowing is, how to keep it, and then the breeding techniques and the taking care of the young ones, including medicine, everything. If you see it's not going to go beyond 50,000,
and your 2 lakhs minimum are assured. Very simple. You start with 1, you can go for 2, 3, 4, 5. You talk about cats. Same thing. Persian cats, for example, they breed thrice or 4 times a year. Okay, 3 to 4 kittens. Maybe slightly lower economy, but at least a lakh, 1.5 lakhs you are getting, and one small cat occupies hardly any space. Talk about ornamental fish. People talk about fish breeding, ornamental fish breeding. I do not promote that. Of course, there are so many subsidy schemes of MPDA. They give you up to 20 lakhs of subsidy, not loan. Subsidy means bakshis, if you want to set up ornamental fish culture. But I would not advise you that, because it is totally governed by the retailers and not by the breeders. Breeders hardly get any money. But there is another way. You can go for rearing. Take the small babies of discus or flower horn and just grow them. Tremendous difference in the price. Tremendous. The smaller babies, I do not know the current market, as I said, outdated. But suppose if the smaller babies are for 100 rupees each, okay, the grown-up will be anytime more than 1,000. And in flower horn, if you get a particular kind of color and a horn, you can sell it for 25,000, 50,000, one piece of that fish. Yes, people talk generally about aquaculture a lot, but unfortunately, something that we teach is most of the times outdated in the syllabus. We are still talking about tiger prawn, whereas nobody is culturing in India, no longer tiger prawn, they have gone over to Benami. There are new things coming up like Basa. Basa has become very popular in the 5-star hotels. Formerly, all these finger chips, fish fingers were made out of Ravas. Today, everything out of Basa, and Basa is imported. It is a kind of catfish variety, in fact. One can think of doing it in India, though it is not yet standardized, because Indian meat of Basa is reddish in color somehow, and something that is coming from Indonesia and other places is absolutely white. But that has totally captured all the hotels, all the restaurants and 5-star hotels. Totally. Something that people are not entered into yet. You can think about it. There are various other things also. Apart from this beauty in small things. You talk about aviary, macaws, cockatoos, 1.5 lakhs, 2 lakhs each. If hand fed and pet, cost goes up to 3 lakhs per baby. You're not thinking about that. That is absolutely official, because our Wildlife Act controls the Indian birds, not the foreign ones. Macaws and cockatoos are imported ones, and those which are bred in captivity, there is no ban. But I would suggest that you must have the proper licensing. Now the import is to some extent banned, but once upon a time, knowing only import procedure of pets would have fetched you a lot of money. For example, whenever you travel in the customs, generally 2 bottles of liquor, 1 carton of cigarettes is free. That everybody knows. But along with that, 2 pets were free, which nobody notices. What is important is getting a license of that thing. How? Not license exactly, a certificate from the country from where it is, where you're purchasing. For example, in Thailand, I have seen on my own, now that baht has become stronger than rupee. But once upon a time when this import was available, was allowed, rupee was stronger than the baht, and I have seen Saint Bernard pup for only 7,000 baht at Thailand. Shih Tzu, Saint Bernard are cheaply available there. Okay, just imagine something that was sold in those days for 50,000 rupees is available for 7,000 baht, which was almost equal to a rupee that time. Rupee was slightly stronger than the baht in those days. Okay, so tremendous scope. In just one, your Thailand trip would be free. Actually, you get a pair. That is now difficult. The import is totally banned. I think Pakistan has also recently banned, but otherwise in a country like Pakistan,
Do you know that even tigers and lions were allowed to import and they were kept as pets? Even in Arab countries, they are allowed. So this pet market is a huge thing. I am not neither, advocating whether you should have a lion as a pet or not. I'm just talking economics, okay, and the scope and the strength. So that is one aspect. There was one YouTube I saw, Amir Khan's program. Somebody was talking about all this and nothing but it was absolute common sense. If I find, I will send that link to Aparna and you please forward it to all the students. He's doing a simple thing. What is he doing? He's collecting the vegetable waste from the market and feeding it to the dairy cows. Those cows, apart from the milk, he's collecting the cow dung, putting it in the, what do you call that, bio energy, okay, biogas unit. So he's getting that methane. Apart from that, whatever slurry is left, he's putting it for vermiculture. And from vermiculture, the cast of earthworms has a very good price. As a fertilizer, organic farming is at the peak today. Funniest part, he also collects the waste from the fish market and is feeding the ducks. So another thing, so it becomes a kind of a cycle. And even that slurry, when it is put, whatever maggots are formed there is feeding them to poultry. Do you know something called as chitin chitosan? See, slowly from the pets, I am coming to agriculture and from there I am entering into the industrial part of it. Chitin chitosan is something that is grossly used in many beauty products, in pharmaceuticals. All these capsules and all are made up of that. It fetches a lot of price. What is this chitin chitosan? Body of crustaceans and insects is made up of chitin. So the prawn waste, which smells awfully, is full of chitin. You can make chitin out of it. This idea I had given to Madam Rupinder Kaur from Khalsa, and she did one project on that, very successful. You can have an industry of chitin chitosan. You know something? Nowadays there is something called as even insect farming, because chitin is extracted from those insects. If you talk about cruelty and other parts, chitin is extracted from the dead insects, those who die naturally in that insect farm. You get it in bulk, and chitin fetches a lot of income. All that I was suggesting all these days was something called as entrepreneurial and industrial biology. In fact, I talk biology, not zoology. So far, I'm focusing only on zoology. But in biology also, there are a lot of things in botany and other things which can be incorporated with common sense in so many aspects of such a thing. From this, let us move on to a little bit of a research and its application to the industry and agriculture. Nematodes. Once they infest an agricultural farm, it is very difficult to get rid of it. Even a whole land is gone. You have to sell it at a dirt rate, because it is very difficult to control nematodes. Why? Because these plant nematodes, which are microscopic, small ones, they exist inside the roots, inside the plant body. They come out only for breeding. So you can kill them with pesticides or whatever, only when they come out. Recently, I have formulated one project which is multidisciplinary, and as it is mentioned, I am with K.V. Pendarkar College. So there, one girl is there who has come. She has done her research in what you can say satellite imaging. So she's there. So she's connected with ISRO as well as IRRS, Dehradun. Now, how we have integrated? There is one Professor Mukherjee who is on nanotechnology. One nematologist is there, zoology, my friend Mahajan, and then microbiologists and others. So we have formed a group. And what is the project that we are doing?
we are trying to develop chitin chitosan as a layer on the nanoparticles which acts as nematocide. It kills the nematodes. So on one hand, we are applying nanotechnology using this chitin chitosan in that, okay? And the satellite imaging correlated with the drone, recording throughout the year, we will try to understand the patterns when there is change in the pattern when the nematodes come out for breeding. So sitting in Pendarkar College, we can control a farm in Konkan. Is it not innovative? Do you know something? You have heard about cloning, isn't it? And we think that it is something absolutely great, very difficult. Polyploidy, for my example. Now I'm going into the research areas and advanced avenues. People feel it is very difficult in human being, or I'm sorry, in the animal kingdom. In plants, it is easy because you can go for tissue culture. May I share with you that in 1986, in an ordinary undergraduate lab of Mithibai College, I had produced polyploids in Puntius japonicus fish. It is not so difficult at all. I'll share the technique with you. You have done root tip slides, or you have done the slides of chromosomes. How do you do it? You allow the cell division to take place and arrest it at metaphase when the chromosomes are spread like this, correct? So that you can watch them properly. What do you do for that? In animals, you inject colchicine. In root tip, you mix colchicine. Why? Because colchicine dissolves centromeres, the bodies at the two ends of the cell, which is dividing, so that when the chromosomes are doubled, they start moving towards centromere, and as they move towards the centromere, the cell is divided into two. Colchicine attacks the centromeres and destroys it. Now, the cell that has just doubled, okay, from 2n, it has got now 4n number of chromosomes, will remain as it is because there will not be any movement of the chromosomes to the opposite poles having no centromeres. Allow that cell to now grow. What will happen? I have made it very simple for you. Its normal chromosome number is now 4n instead of 2n. And now when it divides, it will become 8n and then divide. In short, from this, polyploid cells will be formed. If you do the stripping with an ovum fertilized by the sperm with the milt mixed, immediately treat it with colchicine, do number of experiments with permutation and combination of colchicine concentration and the time of treatment. And if this cell survive, what is an egg? Egg is a cell, a single cell. So a cell which is about to divide into two, the one single zygote about to divide into two, if it is arrested at this stage and then allowed to divide, it becomes a polyp. Has anybody tried it? Dr. Pandian got Bhatnagar Award for that in 1989. Nobody is thinking about it. You think about it, see, what is the application of this? If you have a huge fruit of polyploid, can't you have huge fish of polyploid one? Isn't it? It has a direct commercial application, this kind of a research. Cloning. See, we think that these are very great and difficult things. There is National Dairy Development Board at Karnal, and there is an Indian scientist who has done a lot of cloning in various animals, including wild buffalo. I had been there. Technique is not very difficult. The manipulation is done under the microscope, and you can do it if you learn this technique. Okay. And I do not know whether I should talk about it. Sabha, you're online. Sabha, please come in. Unmute your microphone. Yes, sir. Yeah, I'm asking you one question. Yes, sir. When we do Qurbani in Eid, Yes, sir.
Hmm. So goat that is purchased Hmm. sometimes is sold as high as 1 lakh of rupees. Correct, na? Hmm. Why? What are the criteria of the goat that is sold for 1 lakh? Sir, high content, high meat content, muscles and thighs are very much high. Ah, They are sturdy, correct. and it is fed well. Ah. Hmm. You combine the emotions with that because 1 lakh a person pays only with the emotions, isn't it? Yes. Yeah, so you combine. There are certain other signs as the price increases of the goat. I know that. Fighting Hmm? takes place between them. Fighting between the two goats. Not really, not for Eid. Okay. Fighting done. When the price goes up, there are certain criteria. As you rightly said, size. Hmm. It's a huge goat, Hmm. right? The Yes. color. Hmm. And do you know there are two small important things in that? What fetches maximum? Okay, it has got a proper beard here. Yes. And if there is a mark of chand on top, it is sold for 1 lakh. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. अभी देखो मैं एक आइडिया बताता हूँ. What is cloning? What do we do in cloning? We take one cell, okay, which has 2n number of chromosomes. And what do? We take a fertilized ovum, we remove the nucleus of that ovum and put nucleus of our choice into it so that the entire set of chromosomes are the same as we want, as a result of which a duplicate is produced. Am I right? All these characters coming in a goat genetically is very, very rare. But cloning, can you not produce carbon copies? है कि नहीं? Huh? Yes, sir. And cloning is not very difficult. Take our students to Karnal once and show them what is cloning. Okay, sir. Go into this kind of research. Now, this is high funder research. At the same time, it has application. Well, my friends, I must come to an end somewhere. I have taken you across the journey as to why zoology, how zoology, what are the avenues. We spoke about simple things in pets, we spoke about agriculture, we spoke about industry, we spoke about research scope. Of course, traditionally, if I have to tell, there are so many research laboratories, including National Institute of Oceanography and things like that. Do take them to those laboratories. Why? Because once the Fisheries Survey of India, even in Mumbai, take them to CIFE, take them to NIO, take them to Fisheries Survey of India. Why? Because there are ample job opportunities and our students are not aware. Let them get in touch with those scientists. The day they finish their BSc, they can join there on some project or something, do their research and also their studies and earn something. Okay. Lastly, I want to show you something. Can you see this, all of you? And can you read it? Can you all read this? Yes, sir. Ready to eat prawn pilaf. Ah, No refrigeration required. ah, Best before 6 months from manufacturing date. ah. Experimental sample. Sindhu अब Sadhya अब Sanstha. हाँ अभी इसमें डेट क्या है? Uh, sorry, sir. Date 2010 2019. 2010 एक साल हो गया ना? Yes, sir. अभी I don't want to open it because one sample I have got left. But if I open this, देखो उसको फ्रिज नहीं कुछ नहीं ऐसा ही गिरा था. मेरे को भी याद आ गया, मैंने उठा लिया. ऐसे ही साइड में किधर कचरे में गिरा था. बराबर है? एक साल हो गया. If I Yes, sir. open it, I can directly eat. There is pulao inside with prawns. Pulao will be fresh, prawns will be fresh. Though I have said shelf life 6 months, actually certain samples we have opened even after 2 years they were fine. Who has done this? We are talking about incubation model and what startups now in 2020. We did this in 2010, 10 years back. One of my students, his research topic was this. What is he doing today? He has got an industry of worth about 2 crores of rupees. And this is Mitibai product, by the way. We did it in Mitibai. Okay.
Mithibai means manufacturing. Actually, things were done outside, but guided from Mithibai. All right. Later on, because of constraints in Mithibai, I allowed him to have link up with UICT. The concept was mine. This RT is not my concept. RT is an old concept. But 10 years back, there was not a single non-vegetarian product, and especially fish, which is highly perishable, on the shelf when we prepared this. Innovative product. This fellow got 1 crore 29 lakhs as subsidy under public-private partnership, Make in India. Modi Sahab himself had acknowledged him. And not only that, the factory was inaugurated by Dr. Kakodkar. 1 crore 29 lakhs subsidy, he doesn't have to return it. 60 lakhs loan, which is supposed to return. 10 lakhs from his own pocket, only 10 lakhs. And lot of tax benefits he has got because of this innovative product. So don't think that I am just talking in air and telling you so many things. Believe me, my dear friend students, whatever I spoke is truth and only the truth. At the end, आपको एक मंत्र देता हूं, ये कैसे पॉसिबल होता है और zoology में क्या है. Zoology क्या, किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, ये लाइफ में क्या है. If you want, write it down and follow that, you will be successful. I say that this life is full of opportunities. This life is full of opportunities. Be optimistic. मुझे कोई चांस ही नहीं मिलता है, मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी. नॉनसेंस. अपॉर्चुनिटीज आपके आजू बाजू से इर्द गिर्द रहती है, आपको दिखती नहीं है. आपके दरवाजे पे दस्तक देके जाती है, आप खोलते नहीं है. Life is full of opportunities. All that you need for success is the vision to identify. You should be able to identify it first. An urge to act upon. And then, of course, luck. So, at the end, I say, this life is full of opportunities. All that you need for success is the vision to identify, an urge to act upon, and then, of course, luck. So, wish you the best of luck. Thank you very much. I'm free. You can ask me anything. Thank you very much, sir. It was really a wonderful session, packed with only information. We could learn a lot, mainly when we said as a career opportunity for the students of the specializing in zoology. You spoke all the more about how they could use the skills which they have learned, or maybe even learning from others, to make it as a commercial application. Breeding of, you said about good breed of dogs, cats, and even horse, good breed of cows. You also spoke about aquaculture, how it could be utilized. And cloning was very, very interesting to hear from you, how that could also be very well done. And apart from that, you said for anything, yes, we understand, like you gave example of your own student from Mithibai, who started in a small way, something innovative, which he thought could be well received by people in the long run. And definitely he did wonders, because then he got support from the government, because that being a very innovative project. So I do expect my students also to come up with such innovative ideas and maybe take it ahead, for them, their own sustainability, and also for the betterment of our society and our own country. So as Sir said now, anybody having any question to ask Sir, please raise your hand. We will unmute you. Any student having a question, please raise your hand. We will unmute you. And feel free to talk to me in English, Hindi, Gujarati. Students, you can ask questions even in Hindi. Hindi, Marathi, Gujarati. Yeah, any language. Feel free. Do you have a question to ask? Please raise your hand if you have a question to ask. Oh, I bored you so much. सब लोग सो गए. नहीं, हमारे बच्चे ऐसे हैं सर, थोड़े उन लोग अभी तक खुले नहीं है पूरा. पहले आप. या थोड़ा उनको अपना ये जो इनिबिशन है ना, किस तरह बोलूं, मैं बोलूं तो कैसा लगेगा, वो छोड़ना है. या Shubham has raised hand. Please unmute. Please unmute.
हॅलो सर. हाय शुभम. सर माझं नाव शुभम गोडसे. सर मी मराठीत बोललो तर चालेल ना? कुठल्याही भाषेत. सर माझा प्रश्न असा होता की मी आता SY BSc ला आहे. आणि हा? माझा प्रश्न असा होता की मी आता SY BSc ला आहे. हो. हं. आणि केमिस्ट्री आणि झुलॉजी हे माझे सब्जेक्ट आहे. हं. हं. आणि सर मी थोडंसं एका प्लेज अ स्माइल अशी फाउंडेशन आहे, तिथे इंटर्नशिपसाठी पण आहे आणि प्लस मी सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी पण प्रिपेअर करतोय. तर यात मी विचार केलेला की केमिस्ट्री जर मी थर्ड इयरला ठेवलं तर थोडीशी ॲनालिटिकल थिंकिंग पण वाढेल आणि पुढे स्कोप पण असेल. बट आता मला जेव्हा तुम्ही सेशन घेतलं तर मला भरपूर झुलॉजीमध्ये माझं माइंड ओपन झालं. तर सर मी मग थर्ड इयरमध्ये सर मी काय ठेवू सब्जेक्ट? थोडंसं माझं व्हायब्रेटच होतंय की कॅम संघ जाऊ की झू संघ जाऊ. मला असं वाटतं शुभम हं. की इफेक्टिव्ह नव्हतो आज. कारण मी काय सांगितलं, केमिस्ट्री आणि झुऑलॉजी दोन्ही सारखे आहेत. आता केमिस्ट्रीमध्ये पण किती स्कोप आहेत त्याच्यावर मी बोललो नाही, कारण मी केमिस्ट नाही, बरोबर. पण प्रत्येक विषयाला स्कोप असतो. ॲनालिटिकल ॲबिलिटीची गोष्ट केली तर हे दुर्दैव आहे जर आमचे झुऑलॉजीचे शिक्षक तुम्हाला लॉजिकली शिकवत नसतील तर. कारण माझ्या आत्ताच्या अख्ख्या भाषणामध्ये, आणि तुला खरं सांगतो मी असा विचार काही केला नव्हता. मी खूप घाबरलो होतो सुरुवातीला. खूप दिवसानंतर मी स्टुडंटशी बोलणार म्हणून, पण काय मनात आलं ते बोलत गेलो. आणि हे इव्हन सॅम्पल आहे ना, अरे तुमचा कार्यक्रम सुरू व्हायच्या 2 मिनिटं अगोदर मला आठवलं तिकडे पडलंय, मी पटकन उचलून घेऊन आलो. बरोबर आहे. तुला असं वाटतं का रे की मी लॉजिकल नव्हतो किंवा त्याच्यामध्ये अनालिटिकल हे नव्हतं किंवा देर वॉज नो लॉजिक इन व्हॉट आय वॉज टॉकिंग? फील फ्री. नाही सर तसं नाही. तुम्ही खूप डिटेलमध्ये सर एक्सप्लोर करवलं सगळं. पण केमिस्ट्रीमध्ये सर न्यूमेरिकल्स असतात, डेरिव्हेशन असतात. बाळा, ऑन द कॉन्ट्ररी मी डिटेलमध्ये गेलोच नाही. मी फार सुपरफिशियल होतो आणि मी फक्त कॉमन सेन्स आणि लॉजिकच बोलत होतो. येस सर. इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेशन मध्ये सुद्धा मी लॉजिकच बोललो. त्यामुळे लॉजिक हे सगळ्या विषयात असतं. आपण अनफॉर्च्युनेटली काय करतो माहितीये, जास्त करून झुऑलॉजीला पाठ करतो. का करतो माहित नाही, खरंच कळत नाही. म्हणजे माझं तर स्वतःची धारणा आणि मत असं आहे की इव्हन मुलांनी डेफिनेशन सुद्धा पाठ करू नये. डेफिनेशन काय बायबल, कुराणी किंवा गीतेतनं आलेली नाही ना, माणसांनी बनवले आहेत ना. मग आपण आपल्या शब्दात डेफिनेशन बनवली पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्याला डेफिनेशनची डेफिनेशन माहिती पाहिजे. व्हॉट इज अ डेफिनेशन? समथिंग दॅट इज प्रिसाइज, कन्साइज अँड येट होलिस्टिक, कव्हरिंग एव्हरीथिंग इज डेफिनेशन. मी माझ्या डेफिनेशन स्वतः लिहितो बाबा, जोपर्यंत ते सगळं त्याच्यात आणलंय आणि ते छोटं आहे. त्यामुळे लॉजिक आणि अनालिटिकल ॲबिलिटी ही सगळीकडे असते. आपल्याला अनफॉर्च्युनेटली त्या 10+2+3 वाट लावून टाकली आहे आणि आपल्याला लॉजिक पासून दूर नेऊन पाठांतराकडे आणून मार्क परीक्षार्थी बनवलंय विद्यार्थ्यांना, असं मला वाटतं. तेव्हा लॉजिकचा वगैरे काही प्रॉब्लेम नाही, वेदर यू गो फॉर झुऑलॉजी और केमिस्ट्री, अजिबात नाही. आता तुला सिव्हिल सर्व्हिसेस करायचं आहे, बरोबर आहे ना? सिव्हिल सर्व्हिसेस ना कुठला विषयाला काहीही संबंध नसतो. म्हणजे आमचे भूषण गगरानी जे आता ऍडिशनल चीफ सेक्रेटरी आहेत, कदाचित उद्याचे ते चीफ सेक्रेटरी असतील, भूषण गगरानी, त्यांनी IAS ची परीक्षा कशात दिली माहिती आहे का? त्यांना मेन्सला मराठी हा विषय घेतला होता. म्हणजे अर्थात त्याच्यात गंमतही वाटते आणि थोडं दुर्दैव पण आहे, कारण मला आजपर्यंत ही गोष्ट कळलेली नाही, राजभवनला पण काम केलं आणि IAS लोकांबरोबर काम केल्यानंतर, की मराठीमध्ये मार्क मिळवून ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या स्किल्स कशा काय तपासल्या जातात किंवा झुऑलॉजी मेनला घेऊन ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या स्किल्स कशा काय ब्रिटिशांनी आम्हाला तपासायला शिकवले का मला अजून कळलेला नाही. तो भाग वेगळा. परंतु आत्ताच्या सिस्टीम मध्ये तू कुठलाही विषय घे, तुला मार्क किती मिळतात आणि त्याच्यामध्ये तू IASच्या प्रिलिम्स, मेन्स आणि इंटरव्ह्यूत काय परफॉर्म करतो याला महत्व आहे. त्यामुळे तू केमिस्ट्री घे किंवा झुऑलॉजी घे, त्याचा IASला काही परिणाम होत नाही. दुसरी गोष्ट अगदी स्पष्टपणे सांगतो, हा वाईट वाटायचं नाही, IAS वगैरे डोक्यात ठेवा, पण त्याच्यासाठी 2-4 वर्ष सोडून फुल टाइम अभ्यास करू नका. कारण IAS कसं आहे ना, जेव्हा लाखो लोक कुठून कुठून बॉलिवूडसाठी मुंबईत येतात तेव्हा एक अमिताभ बच्चन बनतो. हा, त्या बाकीच्यांचं काय झालं देवाच ठाऊक. तसं IASचा प्रयत्न जरूर करा, 100% करा,
पण मी IASच करणार आहे असं काहीतरी करून बाकीचं करिअर थांबवणं हे सुसाइडल अटेम्प्ट आहे. ओके. आणि IAS ची पण मला खरंच गंमत वाटते. म्हणजे आय डोंट नो ऑफ द रेकॉर्ड, आय मीन डोंट मेन्शन. मला त्या IAS मध्ये काय असं अप्रूप वाटलंच नाही. खरं म्हणजे मला ऑफर करण्यात आली होती बिकॉज माय 5 years confidential report was outstanding. All the 5 years. तसं असलं की देर इज समथिंग कॉल्ड अ प्रमोटी IAS. आणि मी जॉईंट सेक्रेटरी 43व्या वर्षी झालो होतो. म्हणजे मी नॉर्मल IASच्या वयाबरोबरच गेलो असतो. आय डिड नॉट ऍक्सेप्ट. मी त्यांना सरळ सांगितलं मला IAS व्हायचं असतं तर मी IAS ला बसलो असतो. मला खरंच त्याच्यामध्ये एवढं काय अप्रूप आहे मला कळत नाही. एक गंमत माहितीये का, IASचा पगार आणि टीचरचा पगार सेम आहे. डू यू नो दॅट? IASच्या पगारात आणि टीचरच्या पगारात फरक कधी पडतो माहितीये? तो जेव्हा सेक्रेटरी अबाव जातो तेव्हा. सेक्रेटरी, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, ऍडिशनल चीफ सेक्रेटरी, या 3 याच्यामध्ये आपल्याला ते क्रॉस करून जातात. पण त्याला इक्विव्हॅलंट परत प्रिन्सिपलचा पगार आहे. पुन्हा प्रिन्सिपल सेक्रेटरीच्या इक्विव्हॅलंट व्हाईस चॅन्सलरचा पगार आहे. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम तुमचं अख्खं आयुष्य हे तुम्हाला लेक्चररच्या पगार एवढाच पगार मिळतो. फक्त काय आहे, तुमच्याकडे काही जास्त पॉवर आहे. इकडे तुम्ही पॉवर घडवता मुलांच्या थ्रू. आज मी किती पॉवरफुल आहे, माझे एवढे शेकडो स्टुडंट आहेत, बस झालं ना एका फोनवर. बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे मला हे कळलेलं नाही. हा, अनलेस मला पैसे खायचे आहेत तर माझं इन्कम वाढेल, ते काय मला आकलनात येत नाही. त्यामुळे IAS जरूर व्हायचा. आय एम नॉट डिस्करेजिंग यू. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड मी. प्लीज डोंट. येस सर. येस सर. It is a wonderful opportunity that a person gets to really do something good. If you are a good officer, 101% you can make a difference. समाजामध्ये निश्चितपणे तुम्ही बदल घडवू शकता. आणि त्यासाठी जर तुला IAS व्हायचं असेल तर जरूर हो. माझं सांगणं एवढंच आहे, त्याच्यावर पूर्णपणे विसंबून राहू नको. आणि त्यामुळे केमिस्ट्री घ्यायचं का झुऑलॉजी, हे तुला काय आवडतं आणि ज्याच्यात तुला जास्त मार्क मिळतील, जास्त मार्क तुला IAS कडे लवकर देणार. जास्त मार्क तुला IAS नाही झाला तरी नोकरी लवकर देणार. त्यामुळे माझं हे एकच तत्व आहे. आणि आय थिंक दॅट यू शुड फॉलो. ओके सर. ओके सर. या. आणि ऑल द बेस्ट तुला IAS. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. आणि मेन्स क्लिअर केलीस तर मला कॉन्टॅक्ट कर. तुला इंटरव्ह्यू साठी नक्की मदत करेन. 10 IAS ऑफिसर्स नाही आपण भेटू, काय प्रॉब्लेम. शुअर सर. तर तसं मी स्टेट PCSचा डिसिजन घेतलेला. UPSC मी करत होतो. नाही. UPSC करायचं हे काय सेम असतं, खाली आपण MPSC. हा ते. कळलं ना? येस सर. UPSCचं ठेव, काय प्रॉब्लेम नाही. येस सर. ओके. मेन्स क्लिअर झाला की कॉन्टॅक्ट कर मला. येस सर. शुअर सर. काय नाही करू शकत है ना. सॉरी सर. मेन्स पर्यंत तसे इनपुट्स फारसे देता येत नाही. ते रेग्युलर तुला अभ्यासच करावा लागतो. हा. येस सर. येस सर. इंटरव्ह्यूजला इनपुट्स असतात आणि मी तुला 5-6 IAS ऑफिसर्सची ओळख करून देईन. त्याला तुला नक्की मदत होईल, नक्की. आणि मी स्वतः सुद्धा तुला त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी मार्गदर्शन करू शकेन असं मला वाटतं. ओके. विश यू ऑल द बेस्ट. ओके. ओके सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. Sabha, there is a question on the chat box. Can read out. Yes, ma'am. Let the student talk to me and I would be happy to see the student on the screen. Sabha, if you're operating. Okay, sir. I'm seeing myself all throughout. Okay. Bored looking at me. Aman, please unmute yourself and turn on your video. Aman. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have a question that what are the I mean कि जैसे कि हमारे उसको zoology स्क्रीन के पे लाना, courses है. स्क्रीन पे लाना जरा. I can't see. Aman, video on कर बेटा. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Aman. बोलो अभी. Sir, जैसे कि हमारे zoology courses तो है ही, लेकिन हमारे जो मुंबई यूनिवर्सिटी है एंड वो और क्या सर एक्स्ट्रा कोर्सेज प्रोवाइड करती है हमें, मतलब आफ्टर BSc के बाद. हाँ. सर कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज प्रोवाइड करती है? Extra courses after BSc.
See, after लाइक जी बोलिए अमन जी। जैसे सर एमएससी तो हम करते ही हैं, मतलब बीएससी के बाद हमारा मोस्टली सबका यही प्लान रहता है कि एमएससी करने का। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सर और भी कुछ कोर्सेज होंगे ना दैट हम लोग परस्यू कर सके बीएससी के बाद में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले एमएससी की अगर बात की जाए तो उसमें आपका साइटोलॉजी बंद हो गया, सॉरी, एंडोक्राइनोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एंटेमोलॉजी है, और चौथा जो है वो ओशनोग्राफी है। ओशनोग्राफी के लिए सिंधु स्वाध्याय संस्था भी खुल गई है जो कलीना में है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। उससे बहुत सारे आपको फायदे मिल सकते हैं क्योंकि सिंधु स्वाध्याय के जरिए उसके एमओयूज विदेशों से है, नेवी से है, तो वो सब फैसिलिटीज मिलती है। जैसे कि मैंने आपको वो नेवल वॉर कॉलेज बताया, तो सिंधु स्वाध्याय के बच्चे जहाँ पे मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे 10 दिन बैठ के पढ़ने को उनको मौका मिला है, उनके टीचर्स को और बच्चों को। ये सब बेनिफिट्स वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ये हुई एमएससी की बात। उसके अलावा स्काई इज द लिमिट, इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और अलग अलग कोर्सेज निकले हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में हालांकि सिर्फ एमएससी है जो मैंने अभी बताया, मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे हैं। आप देखा जाए तो इवन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है, और जैसे डीएमएलटी है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह। मगर मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, वो ये है कि आप जरूर वो कोर्स और उसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है ये सोच के वहां की हाई फीस भरें। क्योंकि बहुत बार कभी भी आप जो पढ़ते हैं ना, तो आप इसको लिंक कीजिए कि आप बाद में आगे जाके क्या कमाने वाले हैं। लोग सिलेबस देखते हैं, हालांकि मैंने तो ऐसे देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या टीचर्स भी पूरा सिलेबस नहीं देखते। मतलब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ या मैं क्या पढ़ने वाला हूँ ये बिना जाने बच्चे वो एडमिशन ले लेते हैं। और यूनिवर्सिटी से भी मैंने बहुत बार झगड़ा किया है कि तुम्हारा सिलेबस 6 महीने पहले आना चाहिए। बहुत बार मैं एडमिशन लेने के बाद में वो सिलेबस चेंज होकर जुलाई में आ जाता है, अभी भी ऐसे हुआ। इसका मतलब मैंने एडमिशन लेनी है बिना जाने के मुझे क्या पढ़ाया जाएगा, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। तो मैं आपको ये दरखास्त करता हूं कि आपने पहले सिलेबस देखनी है क्या है, दूसरा वो तुम्हें जचता है क्या देखना है, उसके बाद में दूसरी बात है कि आपने वो सिलेबस पढ़ने के बाद आपको क्या जॉब मिल सकते हैं और वो जॉब में क्या तनख्वाह मिलेगी, या तो अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया तो वो कितना सक्सेसफुल होगा, इसके बारे में सोचना है। अब छोटे मोटे कोर्सेज के बारे में बात करें तो फिशरी के कोर्सेज अवेलेबल है, छोटे छोटे सीआईएफई कंडक्ट करती है बहुत ही बार। वो फ्रेश वाटर तुम्हारा चाइनीज हैचरी होगा, कल्चर होगा, ब्रैकिश वाटर हैचरी होगा, कल्चर होगा, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर होगा। आप केवीआईसी में जाएंगे तो वहां पे एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है। तो ऐसे छोटे छोटे तो अनेकों ये उपलब्ध है। उसके लिए आपको पहले क्या इसमें आपको रुचि है वो देखना पड़ता है, फिर जो प्रोग्राम है वो कितना ऑफिशियल है, उसका सिलेबस क्या है, और उसके बाद जाके आपकी कमाई क्या होगी, ये देख के ही आप एमएससी के अलावा दूसरे कोर्सेज कीजिए। वरना वैसे एमएससी बुरी बात नहीं है, वो इसलिए कि एमएससी के बाद में आपके ज्यादा द्वार खुल जाते हैं। बीएससी से ज्यादा एमएससी के बाद इंटरनेशनल लेवल पे और रिसर्च लेवल पे आपके बहुत ज्यादा द्वार खुल जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको एमएससी में एडमिशन मिलती है तो छोटा मोटा कुछ करने से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके लाखों रुपया फी भरने से पहला प्रॉपर एमएससी करो, और उसके बाद में आपको जिसमें रुचि है, तो क्या है ना, आपका एक पाव पक्का हो गया। उसके बाद में आपने कुछ भी समझो एपीकल्चर किया और एक ट्राई किया आपने, वांदा नहीं, फेल हो गए तो फॉल बैक करने के लिए आपके पास एक मजबूत डिग्री है। ये मेरी आपको ये मेरा सुझाव है। यस ठीक है ना अमन? यस सर, यस थैंक यू सर। जी, एनीवन एल्स? Next.
Students, you can unmute your mic and ask the questions. Talk to me directly, don't worry. Sir, Language, your choice. Sana, turn on your video. Bengali also you can talk, I understand. good afternoon, sir. Good afternoon. सर फर्स्टली लाइक मुझे ये पूछना था, जैसे आपने स्टार्टिंग में ये बताया दैट ड्यूरिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन लाइक हर चीज की मार्केट वैल्यू गिर गई, बट दैट जो पेट सेल कर रहे हैं उन्होंने सडनली लाइक अपने प्राइस इंक्रीज किए एंड दे फेस्ड गुड अमाउंट इन दिस ऑल करंट सिचुएशन. तो उसके अलावा भी कोई ऐसी फील्ड है जिस लाइक अभी ये जो कोविड-19 जो पूरा सिनेरियो है, अब धीरे धीरे सारी चीजें स्टार्ट हो रही वापस से, तो और भी कोई ऐसी फील्ड लाइक एज ए स्टूडेंट अगर हम उसमें एंटर करना चाहे तो वो इस टाइम पे लाइक बेस्ट है, इस चीज में हमें एंटर करना चाहिए एक्सेप्ट देखो, कोविड जो है ना पासिंग फेज है. यस सर. ये पासिंग फेज है, तो ज्यादा से ज्यादा और 6 महीना 1 साल, उसके बाद में कोविड इम्पैक्ट का आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे. बराबर. अभी जो कोविड में मार्केट की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंने तो जूलॉजी के हिसाब से आपको बता दिया. बराबर है. आज के तारीख को पेट मार्केट हैज रीच द पीक. ओके, डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड है एवरीथिंग. बराबर. आप शेयर मार्केट देखो कोलैप्स हुआ है, आप रियल एस्टेट मार्केट देखो कोलैप्स हुआ है, आप लैंड के प्राइस देखो कोलैप्स हुए. मैं कहूंगा ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ना. You enter into it now, but with a proper study. Do not gamble. I'm not encouraging you to go and gamble in the share market. There is a difference between investment and gambling. क्या फर्क है बताओ शेयर मार्केट में? गैम्बलिंग वो चीज होती है कि समझो मेरे पास 1 लाख रुपया है, और XYZ कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 रुपया है, तो मैं कितने शेयर परचेस कर सकता हूँ? 100. यस सर. बराबर ना. 1 लाख है मेरे पास. अभी कोविड जाने के बाद 3 साल के बाद वो 1000 रुपया जो प्राइस है शेयर का, वो समझो 1500 हो गया. तो मैं 3 साल के बाद कितना कमाया? 50,000, क्योंकि मैं 100 शेयर ही परचेस किए थे. बराबर है. लोग क्या करते हैं? लोग गैम्बलिंग करते हैं. मतलब उनके पास 1 लाख रुपए है, वो 100 शेयर खरीद सकते हैं, वो खरीदेंगे 1000 शेयर हवा में, और रोज का शेयर मार्केट का जो डिफरेंस आएगा उतना वो पे करते जाते हैं वो 1 लाख में. मगर कभी वो मार्केट 1000 के ऊपर गया ही नहीं, तो वो लोग पूरे लुट जाते हैं. ये गैम्बलिंग होता है. आप समझे? गैम्बलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको 50,000 नहीं कमाना है, उनको 50 लाख कमाना है, उतने 1 लाख में ही. शेयर मार्केट जो बदनाम है वो गैम्बलिंग की वजह से है. मगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा मेरे जेब में उतने शेयर लेना, उसमें कोई ये नहीं है. प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द वेरियस रेशियोज ऑफ बैलेंस शीट. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, you are able to understand so many things. And if you purchase and sit tight, तो आज तक मैंने कभी किसी को लॉस देखा नहीं है. सिर्फ थोड़ी सी तकदीर होती है जहाँ पे वो कंपनी बर्बाद हो जाए या समथिंग, तो अलग बात है. राइट. तो ऐसे अनेक अपॉर्चुनिटीज है. मतलब जहाँ पे आप मुझे बोल रहे हैं कि पेट मार्केट ऊपर गया है तो हम वो करें क्या? जो नीचे गया उसमें भी अपॉर्चुनिटी होती है, ये मैं बताना चाहता हूँ. जैसे मैंने बताया, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए. आप समझे ना? यस सर. अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए. अभी चलो अपनी बायोलॉजी की थोड़ी सी बात करते हैं. जब भी लॉकडाउन था, एक थोड़ा मैं फ्रीली बोलता हूँ, ऐसा सीरियसली मत लेना. हमारे अभी वाइस चांसलर जो पेडनेकर साहब है, ही इज नंबर 1 फिश लवर. बेचारे की हालत हुई थी जब लॉकडाउन में. फिश ही इनिशियली कुछ नहीं मिल रहा था जब. और ऐसे बहुत लोग होंगे, मेरे पिताजी वैसे ही थे. They'll go mad if they don't get fish. Was it not an opportunity? A person from fisheries could have gone for this online supply and all the things. Correct? है कि नहीं? Of course, 15 अगस्त तक तो बैन ही था फिशिंग पे. But these are also opportunities in zoology. Correct ना?
Yes, sir. So you should be able to identify something that you can do. Okay? Yeah, yeah. Yes. Sir, one more question. Bolo. Sir, like in SYBSC, like paper 3 में एक topic था about reproduction. Like there was a chapter. तो उसमें like assisted reproductive technology का topic था. जी, जी. So sir, like कर सकते हो. मुझे वो You yes, can do. I am like more interested towards that. You can But do. अभी sir, You can do. Yes, it is allowed. but like हाँ मतलब कुछ clarity नहीं, like कैसे enter करूँ, क्या करूँ, कैसे start करना बताता है. हूँ, बताता हूँ, Yes. बताता हूँ, बताता हूँ. मगर उसमें आप टेक्नीशियन बन सकते हैं. You cannot become a gynecologist. Yes, sir. हाँ, तो हमारी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम भूल गया, बिल्कुल भूल गया. So she had done this course. हाँ, आप इंटरनेट पे सर्व करेंगे ना, तो आपको मिलेगी जानकारी. एंड zoologists can do that course and they can assist a gynecologist, okay, in Yes. laboratories. You can very much do that. Yes. There is one person, बताता हूँ, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का वो भ्यूगोड़े सर का स्टूडेंट है, अपर्णा केसरी ने, इज अ पारसी फेलो, अवारी सरने में उसका. हाँ, तो आप वो थोड़ा फाइंड आउट करना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से. Yes, sir. He is doing this. Okay, He will sir. be able to help this girl. Okay, sir. We'll do that. Yeah. Please get in touch with him. Manisha must be knowing, huh? Okay. Your guide. Yes, sir. Yeah, and he's into it. Okay, sir. He can help this girl more. Okay, sir. I'll find it. I'll find the person. Yes. Solved? Your problem is solved? Yes, sir. Thank you, sir. Hmm. Because sir, we have like at that time we have visited one lab. So वहाँ पे Yeah. उन्होंने सारी टेक्निक्स दिखाई थी, like कैसे बिल्कुल. कंप्यूटर पे कैसे वो स्पर्म लेते हैं and फिर वो कैसे ओवम में डालते, like पूरा बिल्कुल. उन्होंने हमको दिखाया था. So since then I was very much interested in this, so that's why. बिल्कुल. One of my students is also doing it, मगर उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है. मैंने बोला ना, मेरा नाम का और मेरा सॉलिड प्रॉब्लम. हाँ, No problem. अपर्णा को भी बार बार बोल रहा था कि मुझे पहले नाम दो, मैं भूलते रहता हूँ. यू विल नॉट बिलीव, मेरा खुद का भी नाम SYBSC में एक बार 20 मिनट के लिए भूल गया था. हाँ. सचमुच 20 मिनट मुझे याद ही नहीं आता था मेरा नाम क्या है. और मैं ना, मेरे पास आई कार्ड ना नोटबुक, वो गलती से जाके क्लास में बैठा था उस दिन, और वो टीचर शांडबाग सर सबके नाम नोट डाउन कर रहे थे एक्सकर्शन के लिए, और मेरे ध्यान में आया कि मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. बाजू में अरविंद कुलकर्णी जो अभी लांजा में प्रिंसिपल है, उसको पूछा, बोला अंध्या मेरा, उसका नाम याद है, अंध्या मेरा नाम क्या है. वो हंसने लगा. आखिर तक उसने बताया नहीं और मैं गलत नाम दे दिया मेरा. ये मेरा जबरदस्त प्रॉब्लम है. आई गेट डैम स्कैर्ड. तो मेरे को याद आया वो लड़की का नाम, तो मैं अपर्णा को बता दूंगा. शी इज अ वेरी नाइस गर्ल. उसके पिताजी और उसकी माँ भी गायनेकोलॉजिस्ट है. देयर ओन यूनिट इन भाईंदर. सी व्हाट हैपेंस, आई रिमेंबर द कंटेंट, मगर ये पर्सन्स के नाम मैं भूलता हूँ. जबरदस्त. सो Thank you, sir. Thank you. Any other student? Riddhi? I think Good afternoon, sir. good afternoon. Sir, I'm interested in embryology May I and know who's talking, please? sir, And come on the screen. Who's operating? Bring the person talking on the screen, please. Yes, sir. Yes, sir. It's Riddhi. yes, sir. Bring her on the main screen, please. Actually, मेरे मेन स्क्रीन पे मैं ही दिखे जा रहा हूँ, पता नहीं है क्या है. Sir, change your view, speaker view. Speaker view. it's at the top, sir. Okay. Right side top, you can see. Click on that. Oh, yeah. So I have to select, huh? Yeah. All right. Okay, I got it. Riddhi. सर एक्चुअली मुझे एम्ब्रियोलॉजी में इंटरेस्ट है एंड जी. मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया है
तो Okay. लाइक मैंने देखा तो मुझे लाइक गूगल पे दो चीजें देखने मिली है। एक कि एम्ब्रियोलॉजी का सर्टिफिकेट कोर्स रहता है जो कुछ वीक्स का रहता है, एंड दूसरा कि एम्ब्रियोलॉजी का 2 इयर्स का फुल टाइम डिग्री रहता है। तो जो फुल टाइम है उसका लाइक उसके फीस बहुत हाई है, एंड जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसके फीस अराउंड 1 लाख 2 लाख जितने हैं। तो सर मैं कंफ्यूज हूँ कि जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो वर्थ इट रहेगा या फिर जो 2 ईयर वाला कोर्स है वही बेटर रहेगा। दीदी, जैसे मैंने पहले बताया, आप जो बता रही है वो कौन सी यूनिवर्सिटी का है, उसका सिलेबस क्या है, उसका आउटकम क्या है, हाँ, ये जाने अगर मैंने तुम्हें बताना बहुत गलत होगा। यस सर। हम्म। सर उसके कॉलेजेस का मैंने सर्च किया तो मुंबई में उसके कॉलेजेस मिले नहीं है मुझे। उसके कॉलेजेस सारे बैंगलोर, चेन्नई एंड वैसे सारे सिटीज में मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी है बेटा? बैंगलोर की मतलब वो बैंगलोर की बैंगलोर यूनिवर्सिटी करके नाम है, और एक कुछ ICRI समथिंग करके नाम नहीं था नहीं, सर। इज इट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अ स्टेट यूनिवर्सिटी? स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है, पहली बात। अगर वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी रहेगी प्रॉपर, हाँ, गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी, क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी। अब बाकी बचा जो सर्टिफिकेट करना या डिग्री करना, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर दैट। आप क्या करना चाहती हैं, आप क्यों पढ़ना चाहती है एम्ब्रियोलॉजी? सर मुझे वो जो IVF प्रोसेस है उसमें इंटरेस्ट है, एंड वो मेरे को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए तो मैंने अभी बता दिया, उसके लिए तो कोर्सेज है, वो डायरेक्टली कर दो, है ना, बराबर ना? तो सर यहाँ पे अवेलेबल है मुंबई में? मेरे ख्याल से बैंगलोर साउथ में कहीं तो भी है। दैट गर्ल हैड गॉन डाउन, बट दैट आवर विल टेल। ओके, और मीनवाइल वो लड़की का नाम याद आया तो वो भी मैं बता दूंगा ओके उसको, सर। वो कनेक्शन दे दूंगा, मैं कांटेक्ट दे दूंगा। ओके सर। बट आवर विल बी एबल टू टेल, ही इज प्रैक्टिसिंग इट इन बॉम्बे, सो बराबर दिया लीड। यस सर। थैंक यू सर। इसने पढ़ा है SY में, इसने Sir, पढ़ा good है afternoon. एम्ब्रियोलॉजी SY में? Hello. हाँ, who was the teacher? Pranjali ma'am. Pranjali, where is she? Sir, she was associated with us last year. अच्छा, नॉट नाउ, No. सॉरी। हाँ, क्योंकि उसने अच्छा पढ़ाया होगा शायद। जब इतने बच्चे वो एम्ब्रियोलॉजी के पीछे पढ़े, टीचर्स इन्फ्लुएंस अ लॉट, बहुत ऐसे होता है। अभी मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती थी स्कूल में, आज भी अच्छी लगती है, बट माय हिस्ट्री टीचर वाज फैंटास्टिक। या Yes, Dheeraj. गुड आफ्टरनून सर. माझं नाव धीरज. आणि सर मला ना बिग कॅट्स वरती काम करायला खूप आवडतं. मी साईड बाय साईड असं बिग कॅट सर. कशावर? बिग कॅट, लायन, टायगर, हा, लेपर्ड. बिग कॅट्स. ओके, लायन, बिग टायगर, कॅट्स. लेपर्ड. अरे बाप रे, काय केलं बाबा तू त्यांचं? सर मी निश्चित सुरू आहेत ना, लेपर्ड मॅन ऑफ मुंबई, हा, त्यांच्या जोडीला व्हॉलेंटियर करतो लेपर्ड ट्रॅकिंग, कॅमेरा ट्रॅपिंग. सर मला हे विचारायचं होतं की आफ्टर म्हणजे काय कोर्स आहे बिग कॅट साठी आणि स्कोप काय पुढे? आहेत. म्हणजे मेनली मला आवडतं आणि मला लायन, टायगर, लेपर्ड असे असतात. अरे मला पण आवडतात रे, पाळायला देत नाही. तू काय तू त्याचे झू मॅनेजमेंटचे प्रोग्राम्स आहेत वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये, हा, ओके. ते कर. दुसरं म्हणजे ऑस्ट्रेलियामध्ये, म्हणजे आता तुला फक्त बिग कॅट्स मध्येच इंटरेस्ट आहे म्हणून, पण अदरवाईज ऑस्ट्रेलियामध्ये वाईल्ड लाईफशी कनेक्टेड अनेक नोकऱ्या आहेत. बिग कॅट्स नाहीत तिकडे, पण वाईल्ड लाईफशी कनेक्टेड म्हणजे इतर, ओके, भरपूर नोकऱ्या आहेत, अगदी गव्हर्नमेंटच्या नोकऱ्या आहेत. तर त्याच्यामुळे तशा दृष्टिकोनातून तू काहीतरी केलं तर तुला फायदा होईल. आणि देन फोकस ऑन दी, त्याला डायरेक्ट नोकरीच मिळेल तुला तिकडे. पण बिग कॅट्स तिकडे नाहीत, म्हणजे त्या ह्यानी नाही करायचं, पण ते एकंदरीत तिकडून शेवटी. आणि शिवाय
झू किपिंगचे पण काही कोर्सेस आहेत. मला असं वाटतं की फ्युचरमध्ये आपल्याकडे पण सिंगापूर किंवा थायलंड सारखे झूज होणार. बरोबर आहे ना? त्यामुळे इथे पण ते स्कोप्स येतील फ्युचरमध्ये असं माझी धारणा आहे. इट हॅज टू हॅपन हिअर. ओके. आणि त्याशिवाय तू त्याच्यानंतर डेहराडून तिथेही नोकऱ्या आहेत है ना, इन्स्टिट्यूट, वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूटमध्ये. बरोबर. आणि फॉरेस्ट ऑफिसर व्हायचा प्रयत्न कर. आणि हा सर चाललंय साइड बाय साइड IFS. हा मग ते कर तू. हा इंडियन फॉरेस्ट, निकित दादाशी बोललो होतो. हा इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस नक्की प्रयत्न कर, नक्की प्रयत्न कर. सर अजून एक क्वेश्चन होता सर, जसं मला ना वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीची पण म्हणजे एक आवड आहे साइड बाय साइड करायची. तर मी एकदा नयन खानोलकर सर आहेत ना, त्यांच्याशी बोललो होतो. तर त्यांना जो अवॉर्ड भेटला होता त्या वर्षी बॅच फोटोग्राफी वाईल्ड लाईफचा, तर ते मला बोलले होते की एका फोटोग्राफीसाठी मला 2 महिने गेले. तर मला हे विचारायचं की लोकांना ते वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीमध्ये बघायला काय आवडेल की जे आपल्या वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीला पण अवॉर्ड भेटेल असं. एक गोष्ट सांगतो, याचं जर उत्तर देता आलं असतं तर आता इकडे जेवढे लोक स्क्रीनवर दिसतात ना ते सगळे म्हणाले असते चला आम्ही वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी करून टाकतो आणि अवॉर्ड घेतो. तेवढं तर कुठल्याही अवॉर्ड कसं मिळतं किंवा कधी मिळतं हे सांगणंला उत्तर नसतं. ते त्या माणसाचं त्याच्यामध्ये झोकून देणं. आणि वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीमध्ये नशीब हा भयंकर मोठा भाग आहे. म्हणजे शेकडो वेळा जंगलात जाऊन राहिल्यानंतर मला काय कधी वाघाने दर्शन दिलं नव्हतं. मग शेवटी एकदा अचानक ताडोबामध्ये, आता खूप रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, तुम्हाला राहायला वगैरे देत नाहीत, त्यांच्या जीपमधनं जावं लागतं. त्या काळात आम्ही आमची गाडी घेऊन पण, इंडिका घेऊन पण जंगल फिरायचो अक्षरशः. आणि मी ना मगरेसर होतो, कीर्ती कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल, आता ते प्रो व्हाईस चान्सलर आहे. आम्ही नागपूरवरनं गेलो होतो आणि ताडोबामध्ये असं समोरनं वाघीण आली. त्या ड्रायव्हरला मी दाखवलं, म्हणलं लुक लुक. तो घाबरला. इंडिकाचा नागपूरचा ड्रायव्हर ना. चावी बंद केली, माझ्या खिडक्या उघड्या होत्या. ती बॉनेटकडे आली, फिरली, अर्ध्या फुटावर माझ्या बाजूला उभी राहिली 7 मिनिटं. म्हणजे तिचा अक्षरशः अख्खा वाफ माझ्या तोंडावरती येत होती. 7 मिनिटं फुल, म्हणजे पट्टेवाली वाघी ना, मोठी लय पण नाही. आता बघ, मला दिसलं नाही एवढं रडायचो, सगळ्यांना दिसायचं, मला नाहीच, सायटिंगच नाही ते दिसलं. म्हणजे इव्हन सिल्वर बेअर पाहिलेत मी छोटे, जे विच इज व्हेरी रेअरली सीन. त्याची अख्खी फॅमिली दिसलेली, पण वाघ नव्हता दिसला तो डायरेक्ट असा. त्याच्यामुळे आता काय, त्याच्यात केवढं लकचा भाग आहे. त्याच्यानंतर त्या काळामध्ये माझ्याकडे होता कोडॅक फिल्मवाला, मगरेकडे होता हँडीकॅम आणि दुसऱ्याकडे डिजिटल, नवीन आलेले डिजिटल. तर त्यांच्याकडे डिजिटल आहेत म्हणून मी बॉदर नव्हतं केलं. आणि ते जे घाबरले ना ते पाठीमागे होते, सेफ होते, त्यांनी काहीच केलं नाही. हे लक्षात आल्यानंतर मी कसा बसा कोड्यात काढला बाहेर. आणि त्या परिस्थितीत मी फोटो घेतला, 2 घेतले. आणि त्याच्यानंतर मी फ्लॅश ऑन केला, 6-6:30ची वेळ होती. आणि मग मला लक्षात आलं आता मी फ्लॅश मारला तर मारेल मला, म्हणून मी थांबून राहिलो. दुर्दैव काय बघ, ते फोटो काढणार म्हणून रोल फिरवला नव्हता. आता कळलं वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीमध्ये नशीब केवढं मोठं असतं. कधी मला न दिसलेली वाघीण 5 वर्षात दिसते, ती माझ्या बाजूला येऊन उभी राहते, पण फोटो जातात फेल. तर असा काही फॉर्म्युला नसतो राजा की ज्याच्यातनं तुला बक्षीस मिळेल. एक गोष्ट मी तुला सांगू शकतो, बी प्रॅक्टिकल. वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफ चांगले विकले जातात. या एअरलाईन्सचे मॅगझिन्स असतात ना, तिथे चांगले पैसे मिळतात, हे मी तुला सांगेन. ओके, सो ट्राय इट ॲज अ हॉबी. Yes, Shiba. Ma'am, I also want to ask something. Can I? Please. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, I went to DY Patil. What's your name, beta? Samreen Patel, sir. Samreen Patel. Yeah, before starting that BSc course, I went to DY Patil.
There I came to know about this course called perfusionist. So I got interested in that, but as my parents suggest me to go for BSc, so I went here only. But now, as I completed my BSc, I want to know more about this course. So will you please tell me something? Yes, I'll tell you. Yeah. After doing that course, what job will you get? I'll be assisting the that heart specialist one. Correct? Yes. Correct? Yeah. Understood? Okay, go to Bridge Candy and find out what salary these people get. Okay. Followed? Yeah. मैंने क्या बताया वही बताया जो सारे कोर्सेज निकले हैं ना, ये पहले करना है कि ये करने के बाद मुझे कौन सा जॉब मिलेगा. अच्छा, तो वहां जाके पूछना है कि जॉब को सैलरी. आई डोंट थिंक दे आर पेड वेल, दे आर ट्रीटेड एज टेक्नीशियंस. वहां पे भी मेरे एक स्टूडेंट ने पहले काम किया था, बहुत पहले, अराउंड 20 साल पहले, ब्रिज कैंडी में ही किया था. ओपन सर्जरी हुआ करती थी ना, सो शी यूज्ड टू वर्क ऑन द हार्ट लंग मशीन. Yes. That is why I said, yeah, you will be a technician. Followed ना? Yes, sir. टेक्नीशियन को क्या सैलरी होती है जाके पूछ के आओ और फिर डिसाइड करो. मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी सैलरी होती है. आज एक लेक्चरर को जो 6th पे या 7th पे में जो भी सैलरी मिलती है, उससे कंपेयर करने के बाद इट विल बी पीनट्स. बट येट यू फाइंड आउट, बिकॉज हर जॉब की सैलरी मुझे पता नहीं है. बट पहला काम सबको बोल रहा हूँ, ये जब इसको आंसर दे रहा हूँ तो सबके लिए, और ये मैं पहले दोहरा चुका हूँ, ये कुछ भी पढ़ने का होगा ना तो उसके बाद में मुझे आउटकम क्या है वो पहले देखो. Yes. जी, Thank you. वेलकम. Shiba. हाँ शिबा, या. Good afternoon, sir. Sir, I plan to do MSc Life Science after my graduation. Later, I'm thinking to pursue PhD. There was one of my professor who was of zoology. I mean, she did the graduation with zoology. Then she graduated by micro. Then she did PhD in biochemistry. So nothing matched. Not her graduation subject, not her master's, not even her PhD. So she tried in Mumbai University like this year. So she was not selected because of this reason. I don't want that to happen with me. I'm done with my zoology. I'll pursue lifestyle. Now what I can do is in PhD in Mumbai only. Like related to life. You've already done life science. No, I'll do. So I'll start researching from now only for PhD. अभी आपके सामने आग से मतलब चला हुआ इंसान है. हाँ. और आपको आग में कूदना है. नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ सर. बराबर है ना, मैंने कहा कब कहा आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मगर आपको ये तय करना चाहिए कि आपको आगे जाके क्या करना है. हाँ, वही आगे जाके क्या अगर आपको फॉरेन जाना है, यहाँ से निकल जाना है इंडिया से, तो जरूर कुछ भी करो. लड़की ने जो किया ना, पढ़ाई जो भी किया ना, अच्छी की है उसने. दिस इज उसने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है. पहले जूलॉजी किया, फिर लाइसेंस किया, फिर व्हाटएवर. दैट इज कॉल्ड रियल स्टडीज. मगर वो इंडिया में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. सो इफ यू हैव कॉन्क्रीट प्लान्स ऑफ गोइंग अब्रॉड, देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग सच रिस्क. इफ यू वांट टू स्टे इन इंडिया, आप पहले लाइन से एक ही सब्जेक्ट में मास्टर्स बिस्टर्स करो और उसके बाद जो करना है करो. अभी मैंने MSc एंडोक्राइनोलॉजी किया फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बराबर 82 में मेरी एग्जाम दी. 15 दिन में मैं जॉब पे लग गया. उसके बाद में ऐसे ही मुझे पढ़ने का शौक, अभी शौक कैसा पूरा करते हैं बताता हूँ. मैंने MSc फिशरीज मैनेजमेंट की फ्रॉम ICAR CIFE एग्रीकल्चर में. उसके बाद में आई एम अ फुल फ्लेज्ड MMS MBA फ्रॉम वेलिंकर्स इन 1988. फुल फ्लेज्ड MMS. ओके, अभी MMS का मशरूम आउट हो गया, वाट लग गया. मेरे जमाने में
मैंने एक भी कैंपस इंटरव्यू नहीं दिया, कैंपस इंटरव्यू भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे टीचिंग ही करनी थी, मुझे नहीं जाना था इंडस्ट्री में। फिर भी हाईएस्ट पैकेज का ऑफर था मेरे पास, गोदरेज सोप्स, दूसरा उसके नीचे वोल्टास कंज्यूमर्स डिवीजन, और तीसरा इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल्स। इतना डिमांड था वो टाइम में एमएमएस को, एडमिशन इम्पॉसिबल था। मगर वो मैं नौकरी करते करते, फुल टाइम था एमएमएस, फुल टाइम, मगर नौकरी करते। आपको आप पूछेंगे फिर आपने क्यों किया, तो उसकी दो वजह है। एक बात शौक था, मुझे पढ़ना था, और दूसरा वो टाइम वो रोस्टर और रिजर्वेशन पॉलिसीज वेर नॉट क्लियर, तो मुझे हर 6 महीने बाद निकालते थे, वापस लेते थे, निकालते थे, वापस लेते थे। बोला ऐसे परमानेंट नहीं निकाला तो इंडस्ट्री में अच्छा जॉब चाहिए करके मैंने ज्वाइन किया, और मैं परमानेंट हो गया। अभी ज्वाइन किया करके मैंने कंप्लीट किया एमएमएस। तो शौक पूरा करना है ना, और आप बहुत रईस नहीं है ना, तो पहले एक लाइन पकड़ के कंप्लीट करो। ये मेरा आपको नुस्खा है। मेरे पिताजी रिटायर्ड थे, इसलिए मैं IIM अहमदाबाद में नहीं ट्राई किया, बजाज में भी नहीं किया, और NMIMS में भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे जॉब करके करना था। वेलिंगकर को मुझे पता था, मैं भैया का स्टूडेंट था, संभाल लेंगे अटेंडेंस के बारे में। आप समझे? तो ये शौकियाना अगर पढ़ाई करना है, तो या तो आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो कि आपको बस आपके शौक पूरे करने हैं, या तो आप ढंग से पढ़ाई पूरी करो, जॉब पकड़ो, उसके साथ में जो करना है करो। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाँ, वो माइक 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 आपका माइक आपका माइक आपका माइक माइक बंद है, कुछ सुनने नहीं आ रहा है। माइक बंद है आपका? हाँ, अब है। आप ही बोलो। हाँ, अभी जैसे जॉब साइड रख देते हैं, पढ़ाई पे ही आते हैं। जैसे सपोज करते हैं मुंबई में रह के लाइफ साइंस से मतलब रिलेटेड रहे, वो कौन सा फील्ड है, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। लाइफ साइंसेस में हाँ, आपके अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के हिसाब से कौन सा बेटर फील्ड है? एक्चुअली मैं लाइफ साइंस पढ़ा नहीं हूँ। हाँ, लाइफ साइंस में जो फील्ड्स अवेलेबल है उसमें एक न्यूरोबायोलॉजी है, हाँ, न्यूरो, ओशनोग्राफी है, हाँ, 2 स्पेशलाइजेशन है। और लाइफ साइंस आपको सोफिया कॉलेज में MSc मिलेगा, या डिपार्टमेंट में, 2 जगह पे है। उसमें न्यूरोबायोलॉजी का सिलेबस बहुत बढ़िया है, सिलेबस बहुत ही अच्छा है, सच में अच्छा है। आई लाइक इट। हाँ, सोफिया जाके देखो, उनका ऑटोनॉमस है, उनका बहुत अच्छा काम करते हैं वहां पे, और लड़कियों का कॉलेज है। यू कैन, मैं लड़के को नहीं बोल सकूंगा, सोफिया जाके देखो, आप बहुत अच्छा है उनका, बेटर देन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। मगर उसके बाद में जॉब क्या मिलेगा वो मुझे मालूम नहीं। जॉब मिल जाएगा सर, जॉब का टेंशन नहीं है। फिर वो वांदा तो नहीं, आपने बोला आपके अंदर स्किल्स है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाए। ये बिल्कुल सही है, मगर आप कौन से जॉब को टारगेट कर रही है? मैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही फिलहाल है ध्यान। अगर नेट क्लियर होता है तो CSIR जैसे रिसर्च में चले गए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ साइंस के बाद आप कहाँ बनेगी? क्या लाइफ साइंस MSc करने के बाद प्रोफेसर आप कहाँ बनेगी? कहाँ बनी? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो PhD की बात का कह रही हूँ सर मैं। अरे मगर PhD करने के बाद अगर आप देखने जाएंगे और कुछ नहीं मिला तो? मैंने वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर, क्या करूँ? तो मैंने क्या बताया हमेशा। देखो, शौकियाना पढ़ाई करनी है तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, जो चाहे करो, पढ़ते रहो। हाँ, आप पढ़ते रहो ना, क्यों नहीं? हाँ, पढ़ते रहो। जिंदगी भर पढ़ो, कोई वांदा नहीं है, वांदा नहीं, अच्छी बात है वो। मगर मैंने क्या कहा, आप जो पढ़ना चाहते हैं वो क्यों पढ़ना चाहते हैं? पहला डिग्री तो आपको क्लियर लेना चाहिए, उसके बाद करो। पहली जो डिग्री है वो आप सोच समझ के लेना चाहिए कि मैं इसके बाद में मुझे दाना पानी कहाँ से मिलेगा, ब्रेड एंड बटर। वो आपको पहला देखना है। जैसे मैंने उसको भी बताया, वो टेक्नीशियन बनने जा रही थी, जरूर बनो, मगर प्रोफाइल देखो, बाद में बनो। बच्चे क्या करते, पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इधर उधर घूमते हैं, मुझे कौन जॉब देगा, कौन जॉब देगा, ये उल्टा है। तो अभी आप बोले कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ बन पाएगी आप? आपने ढूंढा है क्या? क्या है? कौन से कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगी लाइफ साइंस के बाद? वो फिगर आउट करना पड़ेगा। तो पहले वो करो, मैं बता। ठीक है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं जनरल बता रहा हूँ, सबको एक ही आंसर है। वो लाइफ साइंस कहाँ है? सब कॉलेज नहीं।
खाली नाम है एमएससी है, आपको डायरेक्टली थोड़ी ना एमएससी पढ़ाने को लेंगे। तो रुया में है, सोफायाज में है, सेंट जेवियर्स में है, बराबर 3 या 4 कॉलेजेस में है। मैंने कैसे बताया था वो 300 केमिस्ट्री और 30 में, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे कभी आएगी अगर कोई रिटायर होगा ये 3 कॉलेज में, तो आपको वो भी देखना है जाके कि कौन से कॉलेज में है, वहां के टीचर्स की उम्र क्या है। नहीं तो आपको 20 साल बाद अगर उधर पोस्ट निकले तो 20 साल आप क्या करेंगी, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये सब सोचना पहले। हाँ, you have to be practical. Yeah. Yes, Saeed, you can ask your question. Saeed. Good afternoon, sir. Good afternoon to you, Said. हेलो सर, मेरे को सर बायोडाइवर्सिटी में और टीचिंग में दोनों में इंटरेस्ट है। तो कोई ऐसा एमएससी है जो मतलब जिसको मैं साइमल्टेनियसली दोनों कैरी कर सकूं और बाद में फ्यूचर में जॉब भी अच्छा परस्यू कर सकूं? जी, नंबर 1 आपको भवंस कॉलेज ने ऐसे एमएससी शुरू की है, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। थाना कॉलेज में भी है मेरे ख्याल से, पांडोरकर कॉलेज जो भी थाना का कॉलेज है अपना साइंस का, पेजौर मैडम का। यहाँ पे परवीश पांड्या है, वहाँ पे पेजौर मैडम है। उनकी फीस हाई है, मगर फीस 70,000 वगैरह कुछ तो भी है, 50,000 70,000 कुछ तो भी है। हाँ सर। हाँ, वो करने के बाद अगर आपके पास जूलॉजी की डिग्री है तो आप टीचिंग में आ सकते हैं। अगर वो डिग्री इन बायोडाइवर्सिटी या ऐसे कुछ होगी तो जो दिक्कत लाइफ साइंस में नौकरी के लिए आएगी उससे 10 गुना ज्यादा दिक्कत इसमें आएगी। हाँ, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो लाइफ साइंस करो, बायोडाइवर्सिटी करो, आप आराम से निकल जाएंगे इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी। मगर एक बात ध्यान में रखना, आज इतनी सारी स्कॉलरशिप्स मिलती नहीं है, बिकॉज ऑल अराउंड द ग्लोब सिंस 1996 व्हेन मार्गरेट थैचर reduced the grants of higher education in UK, से आज तक स्कॉलरशिप्स बहुत कम हो गई है। बचा हुआ लास्ट आउट। So you should be able to afford the foreign education. हाँ, वो सोच के करना, जो भी करना सर लंबी सोच के करना। बोलो सर, यहाँ के हिसाब से मतलब कौन सा एमएससी अडॉप्ट करना चाहिए? मैं एक जनरल बात बोलूं आपको, अभी मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये मत समझो कि मैं जूलॉजी को प्रमोट कर रहा हूँ, भगवान कसम मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ। मगर अगर बीएससी करते हैं केमिस्ट्री में बीएससी करते हैं या जूलॉजी में बीएससी करते हैं, जिस चीज में बीएससी करेंगे उसमें पहले एमएससी कर लेना। ये मेरा एक सिंपल सा आपको कहना है, आप सेफ हो जाते हैं। अब उसके बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, किधर जाओ, जो चाहे करो, पहले सेफ हो जाओ। ये है ना, ये सब टेम्पटेशंस आई है नहीं, और उसके आगे जाके उतने अच्छे जॉब्स इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है। मतलब 2 लाख 4 लाख खर्चा करो। अभी फॉरेन में भी आप पढ़ने कब जाओ, जब आप वहां सेटल हो सकते तो जाओ, वरना मत जाओ। 50-60 लाख खर्चा करेंगे, पिताजी का घर गिरवी रख के एजुकेशनल लोन लेंगे, एजुकेशनल लोन ऐसे मिलता नहीं है, बराबर है। और उसके बाद में अगर आपको ट्रम्प भेज गया, जिंदगी बर्बाद। ये फैक्ट्स है, एब्सोल्यूट फैक्ट्स है। हाँ, उधर सेटल हो गए तो 50 लाख खत्म करना आपको 2-3 साल का बात है, 2-3 साल में हो सकता है। यू मस्ट ऑल्सो सी कि ग्लोबली अभी कैसा है ना, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वो तो खैरात में किसी को लेंगे नहीं ना, वहां वो उसी को लेंगे जिसकी उस कंट्री को जरूरत है। तो आपको सबको एक मैं आइडिया बताता हूँ, सभी लोगों ने हर एक कंट्री का नीड क्या है वो स्टडी करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई नर्सिंग करता है तो ऑस्ट्रेलिया में 100% जॉब इज कंफर्म। उनका एक सिर्फ ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, 5,000 पर मंथ, 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कंफर्म। तो यू इवन इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, पहला ये करना है कि बाबा उधर मैं सेटल हो सकता हूँ क्या, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द डिमांड देयर, एंड देन यू डू व्हाट यू वांट। Okay, don't fall a prey
to these temptations of private universities, the courses are excellent. I would love you to study that. जैसे stem cells ये वो मैंने बताया, they're excellent. Knowledge wise superb, infrastructure very good. But at the end of it, after doing that, what are you going to do in life is the question. So always solve that question first and then take your decision. जी. शुभम गोडसे. हॅलो सर. हॅलो शुभम. हा सर, जसं तुम्ही बोलले की तुम्हाला थोडं म्हणजे दोन प्रश्न आहे सर माझे. पहिला हा होता की सर तुम्हाला युनिव्हर्सिटीमध्ये थोडंफार म्हणजे तुम्ही सर होते तिथं, तर सर थोडा सिली प्रश्न आहे. नो सिली क्वेश्चन, बिंदास. सर आमचे हे एक्झाम्स होऊ शकतात का सर? हो 100%. 100% होणार. आणि नाही झालं तर परत गव्हर्नर मलाच पाठवतील. OSMच्या वेळी पाठवलं होतं तसं पेपर तपासायला. पुढे बोल. परीक्षा होणार बाळा, परीक्षा होणार नाही असं कधी धरू नको. आणि मी पहिल्यापासून ज्या विद्यार्थ्यांनी मला विचारलं, जेव्हा डिक्लेअर केलं होतं ना परीक्षा होणार नाहीत म्हणून, तेव्हापासून मी सगळ्यांना सांगत होतो परीक्षा होणार, तुम्ही अभ्यास करा. परीक्षा होणार. हा आता ते सेमिस्टर होणार का टर्म अॅन्युअल होणार? खरं हुशार असतील तर त्यांनी पॅटर्न बदलून अॅन्युअल घ्यायला पाहिजे. खरं म्हणजे पॅटर्न एका वर्षासाठी बदलायला पाहिजे, सेमिस्टर्स काढून टाकली पाहिजे. पण परीक्षा होणार नाही असं कृपा करून कोणीही गृहीत धरू नका. म्हणजे तुम्ही अभ्यास करा, अभ्यास केल्यानंतर परीक्षा नाही झाली तर मजा करा, पण अभ्यास न करता परीक्षा झाली मग सो जसं मी सांगतो ना, पहिली नोकरी शोधा आणि मग शिका. ऑलवेज प्ले सेफ. अभ्यासाला लागतं आजपासून. संपले प्रश्न तुझं? घाबरला. अभ्यास करायचं म्हटल्यावर दुसरा प्रश्न उडाला. अरे माईक, तुझा माईक अनम्यूट कर बाळा. शुभम, शुभम माईक अनम्यूट कर. हा येस सर. आणि सर दुसरा प्रश्न असा होता की जसं तुम्ही म्हणाले की गव्हर्नमेंट मध्ये तुम्ही काम पण केलंय आणि थोडंफार सर तुम्हाला आपल्या महाराष्ट्र पॉलिटिक्सचं पण माहीत पडलं असेल. सर त्यावरती बेस्ड एक होता की जर सर मी MPSC दिली आणि 2 स्टार पोलीसची जॉब मला भेटली आणि सर त्यातनी सर जर मी प्रॉपर एक 6 ते 7-8 वर्ष सर्व्हिस केली आणि मग माझं एक प्रमोशन झालं, API किंवा PI मी झालो, तर सर माझा असा विचार होता की ते जर झालं ना सर, आणि ह्या स्पॅनमध्ये 6-7 वर्षाच्या स्पॅनमध्ये सर मी पॉलिटिकल कॉन्टॅक्ट थोडे वाढवून वगैरे वगैरे सर मी एका पॉलिटिकल पार्टीला जॉईन होऊन सर समजा जर त्यांनी मला एका MLA तिकीट दिलं आणि होपफुली किंवा लकीली मी MLA झालो सर, अंधेरी वेस्ट किंवा कुठलचा, पण सर तिकडनं परत मी त्याच पार्टीला 15-20 वर्ष सर्व करून सर मी कॅबिनेट मिनिस्टर बनू शकतो का? हा पण सर थोडा सिरियस क्वेश्चन आहे. मी काय बोललो, लाईफ इज फुल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. तू चीफ मिनिस्टर काय आयुष्यात प्राईम मिनिस्टर पण बनू शकतो रे. परंतु तुझा अख्खा जो काय रोड मॅप सांगितला तो एवढा भयंकर होता, मला भीती वाटायला लागली. म्हणजे तू पहिला इन्स्पेक्टर होणार, युनिफॉर्म मध्ये पॉलिटिशियनना पकडणार आणि मग त्यांच्याबरोबर सामील होणार. ओ माय गॉड, व्हेरी इंटरेस्टिंग. हे सुरस आणि चमत्कारिक बोलला तू बाळा. नंबर 1. नंबर 2, तुझा गैरसमज आहे की मी गव्हर्नमेंट मध्ये काम केलं म्हणजे माझा पॉलिटिशियनची ओळख आहे. 0. अख्ख्या 5 वर्षाच्या राजभवनाच्या कारकिर्दीमध्ये मी मंत्रालयामध्ये फक्त 5 वेळा गेलोय. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, मी कुठल्याही पॉलिटिशियनच्या ओळखीने राजभवनला गेलो नाही. तत्कालीन गव्हर्नर मोहम्मद फजल आणि तत्कालीन सेक्रेटरी, नंतर चीफ सेक्रेटरी झाले सुमित मलिक, ऍक्सिडेंटली माझा बायोडाटा त्यांच्या हातात गेला चुकून, आणि माझी तिथे अचानकपणे नेमणूक करण्यात आली. 1996 पासून मी सगळ्या पोस्ट नाकारल्या आहेत आयुष्यात, इन्क्लुडिंग व्हाईस चान्सलरशिप. जस्ट शेअर करतो तुझ्याशी. मगाशी सांगलं ना IAS पण नाही ना, रजिस्टर व्हायचं, ऍब्सोल्युटली ऑफर दिलेली नाकारली आहे.
त्या राजभवनला ते माहिती होतं, पण त्यांनी मला पत्र पाठवलं नाही, केळवणी मंडळाला पाठवलं. यांच्या सेवेची गरज असल्यामुळे यांना सेवा मुक्त करा, आणि मला जबरदस्तीने नेलं होतं. त्यामुळे तुला जर असं वाटत असेल की मी राजभवनला काम केलं ते माझा काही पॉलिटिकल कॉन्टॅक्ट होता, तर 0. एकाही पॉलिटिशियनला मी अजिबात भेटत नाही, अजिबात माझा संपर्क नाही. हा, आता काही कामानिमित्त, कशानिमित्त, पुढे चीफ गेस्ट आले, काय आले, आता एज्युकेशन मिनिस्टर किंवा काय, तो भाग वेगळा. पण मी जाऊन मंत्रालयात भेटलेलो नाही. मग तुझा पहिला रॉंग नंबर फिरवला तू. आणि तो काय तू रोडमॅप सांगितला, तो ऐकल्यानंतर माझ्या अंगावर काटा आला. असलं काहीतरी करू नको असं मी तुला हात जोडून विनंती करेन. म्हणजे तू पहिला इन्स्पेक्टर झाल्यानंतर, इन्स्पेक्टर म्हणून तू पॉलिटिशियनशी जेव्हा संधान बांधून पॉलिटिकल पार्टी जॉईन करणार सांगतोस ना, हे जरा भयावह चित्र आहे रे राजा, असं नको करू. मला हे कळत नाही, म्हणजे खरंच माझ्या आकलन शक्ती बाहेरच आहे. आणि पॉलिटिशियन होणं हे मला काय समजत नाही. म्हणजे माणसांनी काहीतरी सेवा करण्यासाठी मंत्री होणं हे मी समजू शकतो, पण मी इन्स्पेक्टर होणार आणि मग पॉलिटिशियन होणार, हे सगळं भयानक आहे रे बाळा, असं नको करू. खरंच नको करू. मुख्यमंत्री हो, मला आवडेल. लक्षात आलं का? काहीतरी प्लॅनिंग करू नको रे, ते जरा वाकड्या मार्गाचे वाटतात, तसं नको करू, नको करू. इट डझंट पे मच. आणि हेच आपलं दुर्दैव आहे आपल्या देशाचं, खरोखर सांगतो. ओके सर. म्हणजे तू एमपीएससी ला बस, इन्स्पेक्टर हो, मी तुला डिस्करेज नाही करत आहे, पण मागची ध्येय वेगळी ठेवू नको अशी काहीतरी. इन्स्पेक्टर होणार तर तू त्या मार्गाने तुला काही लोकांचं भलं करता येईल ते कर ना. आणि तुला पॉलिटिक्स मध्ये जायचं तो वेगळा भाग आहे. या. ओके सर. थँक्यू. शुभम, तुझा डाऊट क्लिअर झालाय ना? येस मॅम. Okay. So, a very good afternoon to the respected speaker, our director and in charge principal, Dr. Rajeshwari Ravi, our managing committee, all the teachers and my dear students. Being a student of Dalvi sir, it gives me an immense pleasure to deliver a vote of thanks on this webinar. I, Assistant Professor of Zoology, Ms. Aparna Ghadi, on behalf of Ghanshyamdas Jalan College of Science, Commerce and Arts, would like to thank our resource person, Professor Vinayak Dalvi sir, who graced us to instill a passion for zoology. I also would like to thank our director and in charge principal, Dr. Rajeshwari Ravi, and managing committee for their constant support to organize this informative webinar. I would like to thank my participant students for attending this webinar. I hope you would learn many things, how to choose your career, and first of all, you have to be very passionate for your subject. That is very most important for you. So students, the link of Google form is being provided in your chat box. Kindly fill it to get e-certificate. Thank you so much, sir. I am also grateful to the management of Jalan College, to the director and in charge principal, Madam Rajeshwari, and all the students and both the teachers in zoology and particularly Aparna for giving me this opportunity to have this live interaction with the students, which I honestly enjoy. Thanks a lot, Aparna. Thank you so much, sir. God bless you. Thank you, sir. Bye, everybody. Bye, sir.